just sitting at home and watching these videos. Now, if we completely talk about घर बैठे बैठे आप अपने इंग्लिश को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, रक्षिता क्या ये इतना आसान है? So completely ये बहुत आसान है, क्योंकि आपको ये बात पहले अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है कि आपको इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना है, ना कि आपको इंग्लिश को ऐसे ट्रीट करना है जहाँ पे आपको अपने आप को कॉन्शियस फील करा सको. So as far as we talk about in this program, we will cover from basic to advanced every single thing, जिससे कि आप सीख पाएंगे कि आप घर पे बैठे बैठे अपनी इंग्लिश को कैसे एनहांस कर सकते हैं. Now, very first we are going to talk about how to introduce yourself. Now, if you're talking about the introduction, don't you think? So before going ahead, just help me out everyone. हमारे को इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती क्यों है? हमको इंट्रोडक्शन देने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है? हम लोग इंट्रोडक्शन अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग जगह पे देते हैं और अपना इंप्रेशन को क्रिएट करते हैं, isn't it? So let's say you're meeting to a friend और आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं पे भी ऐसी जगह मिलते हैं किसी से जो आपको ऑलरेडी जानता है पर बहुत टाइम हो चुका है. So इन सारे पैरामीटर्स में आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ती है. Now, don't you think we are using very obsolete way to introduce ourselves? We look very underconfident while introducing. So the first thing is you have to be very confident while introducing yourselves. Now, अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपना नाम कैसे introduce करते हैं. A lot of people say my name is Rakshita. Now, if it is in professional environment, you really need to use your full name. That is, my name is Rakshita Makhija. So this is one of the ways. Now, this is a kind of a way जो हम स्कूल में यूज करते हैं. I'll give you a better way. Now this is Rakshita Makhija because I'm shooting for a huge platform where a lot of people would be watching me. Another way, I am Rakshita Makhija. So I have told you here 3 ways. My name is Rakshita Makhija, this is Rakshita Makhija, and I am Rakshita Makhija. Now this is the way you can choose for which way you are using. But for professional environment, for interviews, say I am Rakshita Makhija. Now the next thing people talk about, your age. Yeah, so how to talk about your age? So people, when it comes to I am, let's say 20 years old. Oh, क्या 20 साल बुढ़े हैं? नहीं, actually this is a wrong way of speaking. Instead you should say I am 20 years of age. मैं 20 साल की उम्र का हूँ, या my age is 20. So this is the way you can talk about your age. First thing, how to talk about your name. My name is Rakshita Makhija. I am Rakshita Makhija. This is Rakshita Makhija. My age is 20 or I am 20 years of age instead of my age is or I am 20 years old. Now, next one we are going to talk about from where do you belong to. Or if people say I belong from, which is completely correct, you are here to talk about the state. So I belong from Delhi, I hail from Delhi, but I can't say that I belong from because it is grammatically incorrect. It should be I belong to Delhi, I am from Delhi, or I hail from Delhi. So I have covered till now 3 points: your name, your age, and from where do you belong to. Okay, so now we are going to talk about, let's say आप fresher है, आप working professional है, so उसके बाद का parameter आप उसी हिसाब से decide कर सकते हैं. So मुझे 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंग्लिश पढ़ाते हुए, सो मैं अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा हाईलाइट करवाऊंगी लोगों से. क्यों? क्योंकि इंटरव्यू क्या देखना चाहता है. अगर आप एक्सपीरियंस है तो वो आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस चेक करना चाहता है. सो लेट्स से आई स्टार्ट विद माय हाईएस्ट एक्सपीरियंस एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस ऑफ माइन. As I'm going to talk about the most prominent experience of mine, that is that I have worked for 2 years in Hindustan Times. Now further on, अगर आपको कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी है, मेन एक्सपीरियंस बताना है, तो शुरू कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं. So I have got over 6 years of experience, whereas the prominent experience that I've got is that I've worked for approximately 2 years in Hindustan Times, 1 year in Times of India. Apart from that, I did for 3 years a little internship, a kind of exposure in Bayville and other places. So this is the kind of way you are going to talk about, because you have to make sure, आपको एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि हम अपने आप का इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं. मैं दोबारा रिकॉल करा देती हूँ, हम अपना इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इंटरव्यूअर जो है वो आपके ऊपर या जो भी आपसे बात कर रहा है वो एकदम सोचने लगे कि वाह, ओ द पर्सन हैज रियली डन
something great in the life. So this is the way we are going to do it. So now if we talk about completely, अब वापस से शुरू करते हैं. हमने क्या क्या कवर किया है? हमने कवर किया your name, your age, from where do you belong to. Apart from that, now we have covered our experience. Now people do ask me, मैम मेरे को कोई experience नहीं है, so मैं कैसे करूँ काम? So in that case, I would request you don't cover your experience or don't highlight something that you are not good at or that you have not got till now. So later on, what you need to work upon is कि आप अब बात करें आपकी qualification की. Now क्वालिफिकेशन के बारे में बात करना भी ना अपने आप में अपनी डिग्रीज को दिखाने का तरीका है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब आप अपनी डिग्रीज को कैसे एक्साइटिंग वे में दिखा सकते हैं, आई विल टेल यू. सो आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. नाउ पीपल से आई हैव डन माय 10th, आई हैव डन माय 12th, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन मास्टर्स. नाउ डोंट यू थिंक इट्स वेरी स्टूपिड? बिकॉज आपने मास्टर्स करी है तो 10th 12th ग्रेजुएशन के बाद ही करी होगी. सो हाईलाइट द टॉप एक्सपोजर ऑफ योर्स. सो आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. Apart from that, my graduation was in mass communication, and I have done couple of certifications also as far as English is concerned. I am TEFL certified, TEFL TESOL certified trainer. Apart from that, from British Council, I have done my IELTS also, and in that particular field, I have taken the training how to teach it. So this is the best way. Instead of जो most of the people करते हैं, what do? Is they start with 10th, 12th, graduation, masters. I'm repeating again, you are not supposed to do that. Be smart. आपको अगर selection पहली बारी में चाहिए किसी corporate sector में, so make sure your name, your age, from where do you belong to, after that your experience if you have, otherwise no. After that you really need to work upon कि अगर आपका experience नहीं है तो आप अपनी qualification cover करें. Now people say I have not done my masters. That's cool. You can talk about your graduation. अभी मैं middle में हूँ graduation की, मेरा final year नहीं हुआ है. अभी मैं क्या बोलूँ? मैं 12th बोलूँ या मैं graduation बोलूँ? So now you can say clearly that I am pursuing my graduation. I am in final year. I've taken. So just explain a bit and then go to 12th. What kind of student you were? देखिए, I am going to repeat this once again. आपका इंट्रोडक्शन इतना पावरफुल, इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि सामने वाला एक बारी में आपकी बात को समझ जाए और शुड बी दैट मच बोल्ड कि आप अपनी बारी को लेके, अपनी बातों को लेके बहुत क्लियर हो. Now, so we have covered approximately 5 points. Now people really ask, do I need to cover hobbies? No, don't use the word hobbies while introducing yourself. It's an obsolete way. हम जब स्कूल में थे तब बोलते थे my hobbies are. Now talk about my leisure activities in my free time, in my part time, or my leisure activities are. So one thing is this, apart from that, people say my leisure activities or in my free time I like to do dancing and let's say singing. So this is the correct way. People say my hobbies are dancing, singing, playing football. Now this is stupidity. अगर आप आर की जगह इज लगा देते हैं, my hobbies is dancing, singing and playing football. So this is completely incorrect क्योंकि इज और आर की गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैंने आज तक इतने इंटरव्यूज लिए हैं लोगों के. So अगर आप इज एम आर को भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, बहुत सिंपल सी चीजें रिपीट कर देती हूँ. In my free time I usually do speak whatever you do. Otherwise if you're using my hobbies, so remove that word hobbies. अगर आपको बहुत confusion है ना कि is लगाना है, am लगाना है, क्या लगाना है, हटा दीजिए. ठीक है. So this is the way you're going to talk about. अच्छा, Now question rises, क्या मैं जो फ्री टाइम में करती हूँ मेरे इंटरव्यूअर पे या जो मुझे जानना चाहता है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है? सो आई से सर्टेनली यस करता है. क्यों? क्योंकि लेट्स से मैं जा रही हूँ ट्रैवल जॉब के लिए, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ आई लाइक टू स्लीप, आई एम अ चॉकोहॉलिक पर्सन, आई लाइक टू डू शॉपिंग. That's completely fine. Now I am applying for coding, a job as a coder. Now I'm saying I love to do shopping, I can sleep whole day, I love to travel a lot. Now person would definitely think ये इंसान क्या मेरी कंपनी के साथ जुड़ के क्या इतना प्रॉफिटेबल हो सकता है क्योंकि इसको तो घूमना पसंद है. सो आपको हर बार सच बोलना अपने इंटरव्यूज में. जिन लोगों के सामने आप इंप्रेशन बना रहे हैं उनके सामने वो हॉबीज बोलिए जो जेन्युइन हो, बट इतनी नहीं कि वो आपके ऊपर क्वेश्चन उठा दे कि ये मेरी कंपनी के लिए राइट है कि नहीं.
So this was another tip for you. You have to make sure while talking about that. Now next we are going to talk about, see, qualification, experience आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं. Now people say, do I need to really highlight about my family? So अगर आप professional interview दे रहे हैं ना, तो ज़रूर डालें अपने family के बारे में. Let's say if I'm saying I am not married, so the examiner or the person or the invigilator or the interviewer, whosoever is sitting in front of me will understand well कि मेरे को आगे, अगर let's say I'm unmarried और मैं traveling job के लिए apply कर रही हूँ, so she is perfect because she doesn't have responsibilities. So if you really need to talk about your family, how you are going to do that? So I have got 4 members in my family. It's a nuclear family. My parents are there. My father is a businessman. My mother is a homemaker, not housewife. My mother is a homemaker. I have got a sibling. She is younger to me, and then she is doing graduation currently. And I'm here in front of you. Instead of there are 5 members in my family, my mama, papa, chacha, don't talk like that. I swear you're not going to be selected there because you have to be very precise. So let's take the example of joint family. So I'm living in a joint family ever since I born, and I have got my uncle, aunt, they stay with us. Apart from that, my parents are there. I have a sibling. Now question is, I have a younger sister, elder sister and sibling. ये कुछ terms हैं जो लोगों को बहुत confuse कर देती हैं. थोड़ा सा इसके बारे में precise करती हूँ मैं आपको चीज़ों को लेके. सबसे पहले sibling क्या होता है? Sibling होता है, instead of saying cousin sister, real sister, आप अगर बुक्स खोल के भी देखेंगे ना, कजन और रियल कुछ चीज नहीं होती. दे आर जस्ट सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. सो जस्ट टॉक अबाउट आई हैव गॉट सिबलिंग्स, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू कवर व्हाट एल्स. यू आर गोइंग टू कवर अबाउट आई हैव गॉट अ यंगर सिबलिंग, एल्डर सिबलिंग. अभी लोगों को ना बहुत मुश्किल लगता है. मैं इसकी छोटी सी टिप बताती हूँ, मैंने कैसे अपने टाइम पे याद किया. सो एल्डर, ई पहले आता है ABCD के अंदर, E elder. So elder मतलब बड़ा, younger Y last में आता है छोटा. This is the best way you can learn it. So I have got an elder sister, मेरी बड़ी बहन. I have got an younger brother, मेरा छोटा भाई. So that is the way you're going to. So first thing I've covered in family, you are going to talk about whether joint or neutral family, or you're going to talk about after that, you're going to cover about your sibling, you're going to cover about your the kind of elder or younger. You're going to talk about all these things. It will gonna set a perfect example in front of the interviewer how to do it. Now we are going to cover the next most important thing actually, for not for you but for interviewers. Now highlight करते हैं कि उनके लिए क्या important है. उनके लिए important है कि आप इस कंपनी में क्यों अप्लाई कर रहे हो और आपका मोटिव क्या है, आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो. So my aim is to become, I want to see myself successful after 5 years. I want to be with this company for about 3 years more, and if I keep on getting progress, I would never leave this. So you are going to talk about all these things. आपका motive उसी से oriented होना चाहिए, or you can cover in little precise manner, that is कि आपका short term goal क्या है और long term goal क्या है. Short term goal is to be with your company, and long term is to give profits to your company. Oh, okay, this looks quite cheesy, and people would definitely gonna select you. I can bet you that. Yeah. So the next point we are going to talk about, what are your strengths and weaknesses. Yeah, sometimes जो आपके इंटरव्यूअर्स होता है ना, वो कभी कभार आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, what are your strengths and weaknesses, what are your positives and negatives. So आप ये चाहें तो अपने इंट्रो में खुद से कवर करेंगे तो एक एडिशनल पॉइंट लेके आता है अपनी चीज में. So positives again, you cannot say that my positives are, or you can say my strengths are that I can weight myself, or I can lift 100 kgs. Now like seriously ये कहीं मैटर करता है इंटरव्यू के लिए? नहीं. So you're going to talk about what I am a smart worker instead of hard worker. I really believe I'm intelligent. I'm good in academics. So something जो उसके लिए मैटर करता है. Apart from that, we are going to talk about what are your negatives. I cry whenever I have breakups. Oh. So you are not going to talk about that. Negative cannot be that much negative कि examiner, interviewer, जो भी सामने बैठा उसके ऊपर बुरा impact पड़े. You can say I'm so honest sometimes that really it pays me off. So मैं इतनी honest हूँ कि कभी कभार ये मेरे ऊपर ही बुरा impact डालता है. Now do you really think so ये negative point है? नहीं है. सो इसको पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करेंगे. ठीक है. सो सच काइंड ऑफ नेगेटिव्स यू आर गोइंग टू यूज दैट इट विल, आई एम वर्कaholic.
I can work for like hours and hours. So that point of time it will work as your पॉजिटिव देयर, नॉट एज नेगेटिव, बट हाँ आपके लिए नेगेटिव हो सकता है. आई कांट से नो टू अदर्स. ओ माई गॉड, यू आर such nice beauty, right? Nice soul. So ऐसे points cover करें instead of anything else. I am emotional, I am dumb, people have cheated me multiple times. Don't say this and these are the reasons. मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आप काफ़ी हद तक कोरिलेट कर पाएंगे कि ये बेवकूफ़ी आप करते आ रहे हैं. मैंने कॉन्सेंट्रिक्स, लिंक्डइन के ऊपर भी बहुत काम किया है. कॉन्सेंट्रिक्स हो गया, आपने एमएक्स सुना होगा. मैंने वहाँ पे भी मैं गई हूँ, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं. इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद जो मुझे पता चला वो मैंने इस वीडियो में ज़रूर कवर किया है. इसके अलावा एक नीचे पीडीएफ हम ज़रूर कनेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, वो आप क्लिक करें, उसके ऊपर प्रॉपर फॉर्मल जो भी मैंने पॉइंट्स कवर करें आपको वो राइटिंग में मिल जाएंगे. आप उसको 4 बार 5 बार ये वीडियो देखो जब तक कि ना आपकी ज़बान पे ये चीज़ सेट हो जाए कि आई एम नॉट 20 years old, आई एम माई एज इज 20. ये ना फिट हो जाए अगली वीडियो पे, तब जाना जब कॉन्फिडेंस आ जाए. देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज है. जितना कॉन्फिडेंटली बोलोगे ना उतना आसान होगा आपके लिए चीज़ें कवर करना. कुछ क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछेगा. थैंक यू.